हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अगर आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो राइट यो इन द चैट बॉक्स। बहुत समय नहीं लूंगा आपका आज, जस्ट एक छोटा टिप, बिकॉज आपका पेपर आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। सो आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू एट द एंड ऑफ द सेशन। सो विल जस्ट हैव अ स्मॉल डिस्कशन अराउंड एग्जैक्टली क्या करना है केमिस्ट्री में, क्या नहीं करना है, और इसको जेई के एग्जाम के साथ किस तरीके से मैप करना है, बिकॉज केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू जेई प्रिपरेशन, व्हेन इट कम्स टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो या एडवांस का एग्जाम हो। और हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप जेई लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हैं साथ में ही, बिकॉज एनसीईआरटी इज द बेसिस फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट? सो यस, गुड इवनिंग एंड जस्ट राइट यो इन द चैट बॉक्स अगर आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जोश इज गुड एट दिस साइड, जोश आपका अच्छा होना चाहिए। और मुझे फटाफट ये भी बता दो कि फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ आप लोगों का, क्या आपको हेल्प मिला वेदांतु चैनल से या नहीं? जो भी हम स्प्रिंट रन कर रहे हैं और आपके टीचर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा हुआ होगा। बट राइट, अगर आपको फायदा हुआ है तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। यो तो मेरे लिए था, यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि जो स्प्रिंट हम करा रहे थे उससे फायदा हुआ है तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। एंड 55 प्लस इन फिजिक्स, धनुष ग्रेट, मोहित, पपाया एंड मुदित, यश, दिनेश ग्रेट। पेपर नहीं हुआ अभी, यस संजू, ऑब्वियसली फ्रॉम अदर बोर्ड्स। अकिलन, दिनेश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई कैन सी 67 इन फिजिक्स, ग्रेट। थैंक यू अस्मित। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई कैन सी 70 आउट ऑफ 70, 60, 66, 70। ऑसम, ग्रेट ग्रेट बच्चों। सो हम कोशिश करेंगे, जो भी हम केमिस्ट्री की भी स्प्रिंट कर रहे हैं अभी आपके साथ दिन रात, उस पे भी आपको केमिस्ट्री में बहुत फायदा मिलेगा। बट केमिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट विच इज लाइक फॉर बोर्ड लेवल, फॉर कंपटीशन लेवल, चाहे वो जेई मेन का हो, जेई एडवांस को, सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और सब जब आप करोगे तो वो एक दूसरे को हेल्प करता है लेवल को इंक्रीज करने में। सो विल गो अहेड, नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। सो विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट एग्जैक्टली पैटर्न क्या है और आपको किस तरीके से पैटर्न को ध्यान में रखते हुए फोकस करना है, राइट? बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट जब मैं तैयारी कर रहा होता था तो मुझे बोर्ड के समय, मेरे जेई के लिए केमिस्ट्री वाज वेरी गुड, बट बोर्ड के समय मुझे केमिस्ट्री में बहुत डर लगता था, बिकॉज बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें आती थी केमिस्ट्री में जिसमें नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड देयरफॉर फॉर बोर्ड्स यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस इफ यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन योर केमिस्ट्री एग्जाम, राइट? सो मेरा हेल्प हमेशा मिलेगा विशाल। सो जस्ट लुक एट द पैटर्न एंड विल जस्ट टॉक अबाउट द पैटर्न क्विकली। सो these are the different sections, section 1 2 3 4, and you can see the variation of marks in all the sections. Now what is important over here bachcho, personally what I feel, and I will just tell you a few things which you should not commit mistake. सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो ये है कि आप ये देखो कि ये जो दो सेक्शन हैं, और इनफैक्ट ये जो थर्ड सेक्शन है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क है, एंड दिस इज ऑल 21 21 एंड 21. नाउ यस, अरविंद सर डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। अब क्या होता है, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनको लगता है कि उनकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है, बट जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हो आपको ये नहीं पता कि 1 मार्क में कितना टाइम देना है, 4 मार्क में कितना टाइम देना है, 3 मार्क में कितना टाइम देना है, या 5 मार्क में कितना टाइम देना है। एंड बिकॉज ऑफ योर पुअर टाइम मैनेजमेंट यू टेंड टू स्पेंड मोर टाइम इन 1 मार्क क्वेश्चन, एंड टिपिकली क्या होता है, आप इस सेक्शन में आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो। सो टाइम स्पेंड इन दिस सेक्शन इंक्रीजेस, एंड इट इज जस्ट बिकॉज कि आपने कभी भी घर में बैठ के आपको लगता है यू हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड इट वेल, यू फील यू हैव प्रिपेयर्ड इट वेल, बट what you are doing is you are reading theory again and again, and therefore you understand everything, you know the concept, but still when it comes to the actual paper you will find that paper was lengthy. It is just because you have not practiced the paper as you should have practiced in a time bound frame, and therefore you spend more time over here compared to the other sections. And typically I have seen that at the end you tend to leave few questions of a bigger section, which is like 5 mark question or 4 mark question, you tend to leave in the paper because of the poor time management. So what you should be doing at this point of time, especially for next two days, is you should actually take previous year paper and you should solve it in the time bound frame. मतलब
put a clock in front of you and start solving the paper in the same time. So it will definitely help you actually manage this time. Pehla tip number 1. The second tip, which is very important, is that and which I practiced and I got very good marks, is I started with this section. So I went from here to here. So even if I left few questions of section 1, still I was able to get more than 90 plus in my chemistry paper. In fact, including practical, so more than 60 plus in my overall chemistry paper, because at that time it was 70-30, now it's 80-20. So basically, is section mein, because you just move from here to here, what happens is you will tend to increase the chance of gaining more marks than leaving a question of higher weightage. Okay. केमिस्ट्री में डर लग रहा है, फिजिक्स में 66 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं, केमिस्ट्री में ओके. सो केमिस्ट्री में द ओनली थिंग इज देयर आर फ्यू टॉपिक्स दैट आई विल टेक. सो लेट्स गो अहेड एंड एक्चुअली सी फ्यू टॉपिक्स एंड फिर एक एक करके हम उस पर बात करेंगे. सो इफ यू लुक एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, 23 is from physical chemistry. Okay, we'll just start from here. So 23 was from physical chemistry, 19 is from inorganic chemistry, and 28 marks is from organic chemistry. So of course organic chemistry becomes very important, and this is also very important from your exam perspective. So even competitive exam perspective, organic chemistry is very, very important, and therefore you should spend more time over here. And the best way to do at this point of time, जब आपके पास समय कम है, either you watch this sprint where the teachers are really working hard, they are revising each and every concept so that quickly you will be able to revise the entire thing. And second, solve previous year question in a time bound frame. Do not read the question, because most of the time we read the question, we feel that we have understood it, but when it will come to the exam time, you will find that the paper is lengthy because you have not practiced it within the time frame, right? So physics generally was not very difficult, but it was lengthy, and again lengthy is clear because you have not practiced it in a time bound frame, right? But so now, so first thing that I would say is you should divide the syllabus. You should divide the syllabus into two parts. What is your strong area? What is your weak area? And on strong area, I feel that you will definitely score. It's a board exam, it's not application. So by this time, you must have already remembered it. But in your weak area and moderate area, very weak or weak area, what you should not be doing is you should not be going through the entire chapter. What you should be doing is, instead I have written it over here, that you should be actually following the previous year paper. So if you actually look at this, you should devote enough time to revise your strong topics. But weak and very weak topics, you should actually practice previous year questions in these areas, because if you go and read at this point of time when 2 days are left, so you will be wasting your time and you will be taking your time from strong area. So मेरा advice ये रहेगा कि obviously focus on all the topics, because it's a board paper, it's not an application thing. You should focus on entire thing, but at the same time you should be actually on the weaker and very weak area, you should be only focused on the previous year questions rather than focused on the reading the entire theory and going through the NCERT again and again, right? Awesome, Sahil. So quickly I will revise whatever I have said. What you should do is you should revise thoroughly. You should revise your strong areas very, 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 very. So revise, I will just add over here. So what you should be doing is revise strong topics thoroughly. This is the first point. And second is revise weak topics from previous year. So these are the two topics that you should be doing, two things that you should be doing. That strong topic completely revise, but जो weak topic है, you should revise it from previous year. This is important and you should just keep in mind. The next important thing is time management. और time management करना कैसे है? I just said that you should solve the previous year questions in the time bound frame. You should put a clock in front of you, set a timer, and do not just get out of the table chair. Same condition as the board exams. Put the time,
timer in front of you, and then give a paper in 2 hours 45 minutes instead of the entire 3 hours. So what will happen is you will restrict yourself, you will give less time in at house when you are preparing, because typically in exam, due to stress, you tend to be little slower. Okay, so this is how you should be doing. And obviously last thing जो मैंने आपको बोला था, I will not take much of a time, आपका टाइम बहुत 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 प्रीशियस है. एक important news जो मैं आपको बताने वाला था, which is very very important, is that you all were asking me about the test series. So here I actually launched the test series. So if you look at the next thing, what we are launching is, we are launching the test series with a video solution. So this is the first time any institute is doing that 20 full length test series, which will be JEE main based test series, which will start from 18th of this 17th को. Most of you are actually finishing your paper. कुछ लोगों का 21 को भी है, 21st को, but mostly you are finishing on 17th. From 18th we are starting this test series, which will have 20 full length tests with video solutions. This is very important, बच्चों. Every test will be accompanied by a video solution, so that you can actually go at your own pace and understand, remember all the questions. These tests are actually very 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 similar to your 2019-2020 paper. We have actually, our team has created very very similar paper as 2019 and 2020, so that you will find that when you will be giving your actual paper, you will find that दोनों का जो सिमिलैरिटी है वो बहुत 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 सिमिलर होगा. एंड ऑब्वियसली लेटेस्ट पैटर्न पे है डिटेल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड ऑल इंडिया रैंक. एग्जैक्टली वेयर यू शुड फोकस ऑन, व्हाट विल बी योर वीक एरिया. दिस ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, which you can avail by using this link vdnt.in/AP-JEE Anand Prakash. AP is Anand Prakash, JEE test series. So if you use this coupon code, you will get at this price, but this is a actually very 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 important thing for all of you. 20 tests, and in which 5 are practice and 15 will be online, as you will give in your final day. So basically you will practice online, you will get a video solution, and all these tests plus 5 practice tests which you can practice at different time frame also, right? So all this if you will get at this particular thing. But बच्चों, it is very important that मेरा काम बोर्ड से ज़्यादा आपको मीन्स में रैंक दिलाना है, and therefore always I will talk more about JEE rather than boards, because board is something which we have to gain marks. डेफिनेटली आपके सामने सर पे खड़ा है एंड उसमें मार्क्स तो लेके ही आने हैं, बट दिस इज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ड्रॉपर बैच में हो, आप सबके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड why I came in chemistry, because chemistry is very very aligned to your board and competition preparation. So board preparation and competition preparation of JEE goes hand in hand. तो आप अच्छे से मेहनत करो, जाके फोड़ फाड़ के आओ. केमिस्ट्री के बाद बहुत लंबा गैप है. हम इनफैक्ट केमिस्ट्री के बाद हम 2 टेस्ट फ्री सबका लेने वाले हैं JEE एडवांस का, जिसके बेसिस पे all of you, if you are not aware, we have actually also launched एकलव्य, which is एडवांस का बैच, एडवांस की तैयारी के लिए, which is free of cost. और वो उसमें एडमिशन के लिए हम ये 2 टेस्ट लेंगे बिटवीन योर केमिस्ट्री एंड मैथ्स एग्जाम. एंड उसका पर्पस है आपकी वीकनेसेस को जानना. हम जानेंगे आपकी वीकनेस क्या है. द एंटायर सिलेबस in the after 18th of March we'll plan for advance separately. This is for mains, but that will be for advance, right? When dropper batch will start, dropper batch तो बच्चे अभी अगर आप ड्रॉप में हो, अभी 12th में हो, तो ड्रॉपर बैच will start only in May. And अगर आप करेंटली ड्रॉप बैच में हो तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो, राइट? अस्मित इज सेइंग सर फिजिक्स का पेपर बुरा चला गया, वेंट बैड. सो डोंट वरी अबाउट एनी प्रीवियस पेपर विच हैज गॉन बैड. जो पेपर आपके सामने है, प्लीज जस्ट फोकस ऑन दैट सो दैट यू एक्चुअली गेन बेटर मार्क्स इन दैट पेपर. बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देना. एक एग्जाम खराब हो गया, उससे इतनी टेंशन मत ले लो कि आगे के सारे एग्जाम खराब हो जाएं. मतलब ये मेरे साथ हो चुका है जब मैं एक्चुअली जेई का एग्जाम दे रहा था. व्हेन आई गेव माय जेई पेपर, जेई एडवांस पेपर, इट वाज सब्जेक्टिव. द फर्स्ट पेपर वाज मैथ्स. I did it extremely good. I felt I will be in top 100 of IITs because it went much better than my expectation, and I was very ecstatic. Matlab, I was jumping with joy. But the second paper, it was subjective. So second paper, there was a gap between first paper and second paper. Second paper was physics, and I did terribly bad.
and because of that my best subject, which was chemistry, I really did not do well because I kept on thinking entire chemistry paper that my actually physics paper went bad. And trust me bachcho, that is a bad thing. You should not carry your negative sentiments into the next paper or positive sentiments into the next paper. You should just be relaxed. Every paper is just another paper. It should not judge you. You are there to actually judge the paper, get better control on the paper. So don't be worried about the paper. Just go there and fortify the paper. Just बिल्कुल अपने जोश में जाओ, फोड़ के आओ, और मतलब जस्ट डोंट वरी कि कोई आपको जज कर रहा है. कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है, आप खुद अपने आप को जज कर रहे हो, इसलिए इतनी टेंशन ले रहे हो. आप बिल्कुल टेंशन मत लो. डोंट वरी अबाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स. इवन योर पेरेंट्स, एवरीवन, दे विल टॉक अबाउट यू डूइंग गुड, but they are not putting pressure on you. They are not expecting anything out of you. Whatever you have done till date, it's great, and last moment just enjoy your time. So don't worry about anything, don't take any stress, and just chill pill ले लो बच्चों. And बिल्कुल हर एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करो. उससे ज्यादा भाव मत दो, उससे कम भाव मत दो, राइट? अगर कोई बच्चा सिर्फ अभी पेपर के टाइम पढ़ रहा है तो लाइन तो क्या उसके 90% आ सकते हैं. सी बच्चे, बोर्ड का जो पेपर है ना, बोर्ड में आ सकते हैं. जनरली मेंस का जो पेपर होता है या एडवांस का पेपर होता है, आप लास्ट मोमेंट उठ के तैयारी करने लग जाओगे तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे. अगर आपने आज तक कोई तैयारी नहीं करी है एंड इफ यू आर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग मोर देन 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल तक आ जाएगा. बट 99 लाना टफ है. बट ऑब्वियसली उसके लिए टाइम लगता है. इफ आई से कि 99 आ ही जाएगा, आप 15 दिन तैयारी करो 99 आ जाएगा, तो गलत बात है बच्चे. नहीं होता, ऐसा नहीं होता. बट बोर्ड में आ सकता है बिकॉज बोर्ड इज सब्जेक्टिव. आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ढंग से रट्टा भी मार लोगे ना तो नंबर आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ रिपीटेटिव पैटर्न. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड एंड देयरफॉर लाइकलीहुड ऑफ सेम क्वेश्चन रिपीटिंग अगेन इज वेरी हाई. सर मेंस वालों के लिए फ्री कोर्स, Aditya, a very good surprise will be coming all of your way. Just wait for your board exams to get over. आपके लिए मेंस, जो भी मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी एक बहुत अच्छा न्यूज हम लेके आएंगे. सो डोंट वरी, जस्ट बोर्ड खत्म होने का इंतजार करो. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट. वी आर ऑल एक्साइटेड. आवर टीम इज गेयरिंग अप फॉर डे इन एंड डे आउट प्रिपरेशन विद ऑल ऑफ यू फॉर द जेईई मेंस प्रिपरेशन. सो हम सब तैयार हैं. क्या आप तैयार हो कि नहीं? आप बस इसका आंसर करते रहो, अपने दोस्तों को बताओ. प्लीज शेयर, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको बहुत फायदा मिले, आपको सारी नोटिफिकेशन मिले कब क्या क्लासेस हो रही हैं. और बोर्ड के बाद वी आर कमिंग अप विद अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, चलो, ग्रेट बच्चों. एंड इफ आई डिवोट 11 and 12 फॉर जेईई, कैन आई स्कोर 99 परसेंटाइल? अभी बहुत टाइम है. अगर आप अभी 11 12 ऑब्वियस सी बात है. आलोक, ओनली जेईई एडवांस की फुल टेस्ट सीरीज, ओनली जेईई एडवांस की हम जेईई मेन के बाद लॉन्च करेंगे. ओके, चलो बच्चों. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. प्लीज एनरोल फॉर दिस टेस्ट सीरीज इफ यू आर लुकिंग फॉर जेईई मेंस में. अगर आपको साहिल, चलो बाय बाय टाटा. अगर जेईई मेन में आपको अच्छा करना है तो इस टेस्ट सीरीज को प्लीज ज्वाइन करें. चलो बाय बाय टाटा, टेक केयर.